बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे नई वीडियो में आपको खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो ये हमने स्मार्ट सीरीज़ बुक के MCQ स्टार्ट किए थे जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सारे टेस्ट में इससे MCQs आते हैं। MCQ नंबर 721 है हमारे पास। द प्राइमरी रीज़न फॉर द लो पावर फैक्टर इज़ ड्यू टू द इंस्टॉलेशन ऑफ ऑप्शन ए DC मोटर्स, ऑप्शन बी सिंक्रोनस मोटर्स, ऑप्शन सी हमारे पास इंडक्शन मोटर, ऑप्शन डी कम्यूटेटर मोटर्स। तो इसका जवाब हमारे पास सी है। तो प्राइमरी रीज़न ऑफ लो पावर फैक्टर हमारे पास इंडक्शन मोटर की वजह से होते हैं, इंस्टॉलेशन ऑफ इंडक्शन मोटर। MCQs नंबर 722 है हमारे पास। The most suitable location for the power factor improvement device is option है हमारे पास option A near the electrical appliance which is responsible for the poor power factor, option B at low sending end at the low sending end, option C at the receiving end in case of transmission line, ऑप्शन डी हमारे पास है ऑप्शन बोथ ए एंड सी। इसका जो हमारे पास ऑप्शन डी है ए एंड सी हमारे पास की वजह से पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट हो सकता है। ऑप्शन MCQ नंबर 723 हमारे पास। इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द पावर फैक्टर ऑफ इक्विपमेंट ऑपरेटिंग एट लैगिंग पावर फैक्टर कैपेसिटर इज़ कनेक्टेड। तो ऑप्शन है हमारे पास इन सीरीज़ विद इक्विपमेंट, ऑप्शन बी हमारे पास इन पैरेलल विद द इक्विपमेंट, ऑप्शन सी इन सीरीज पैरेलल विद द इक्विपमेंट, ऑप्शन डी आइदर ए और बी। इसका जब हमारे पास ऑप्शन बी है इन पैरेलल विद इक्विपमेंट, उसकी वजह से पावर फैक्टर जो है इम्प्रूव हो सकता है। MCQ number 724. If the load resistance decrease in zener regulator series current, option A decrease, B option B stay the same, option C increases, option D हमारे पास है equal the source voltage divided by the series resistance। so इसका जब हमारे पास ऑप्शन बी है stay the same से। MCQ number 725. The device associated with the voltage control capacitance is option A light emitting diode, option B photodiode, option C variator diode, ऑप्शन डी जीनर डायोड। इसका जवाब हमारे पास ऑप्शन सी वेरिएटर डायोड। MCQs नंबर 726. To isolate an output circuit from the input circuit, which is the device to use, option A back diode, option B optocoupler, option C 7 segment indicator, option D tunnel diode। इसका जवाब हमारे पास ऑप्शन बी optocoupler। To isolate an output circuit from the inputs, optocoupler device is to use। MCQ number 727. The danger of electric shock is maximum, option A during arcing, option B after arcing, option C while inserting electrode into holder, option D none of above। तो इसका जवाब हमारे पास सी है while inserting electrode into the holder, the danger of electric shock is maximum। MCQ number 728. The average DC output voltage for half wave rectifier is 13.06 voltage. The average value of full wave rectifier is the double of these, double of 13.06। तो हमारे इसका जवाब हमारे पास है ऑप्शन है 26.1
13.0 हाफ वेव का है और फुल वेव का फिर इसका डबल होगा 26.1। MCQs number 729. The major advantages of a phototransistor as compared to photodiode is response to higher frequency AC operation, option C increasing sensitivity, option D durability। इसका जवाब हमारे पास इंक्रीजिंग सेंसिटिविटी है, सही। ऑप्शन MCQs number 730. When transistors are used in digital circuit, they usually operate in option A active region, option B breakdown region, option C saturation and cutoff region, option D linear region। इसका जवाब हमारे पास ऑप्शन सी है, saturation and cutoff region। MCQs number 731. Power amplifiers in high frequency applications are mainly used. Option A as a switch, option B as amplification, option C as protective device, option D voltage controller। इसका जो हमारे पास ऑप्शन है एज अ स्विच हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी पावर एम्पलीफायर यूज़ होता है। MCQs number 732. Input impedance of an inverting opto amplifier operational amplifier is option A 0, option B infinity, option C 100 mega ohm, option D none of above। इसका जवाब हमारे पास ऑप्शन डी इनपुट impedance of inverting operational amplifier is infinity। MCQs number 733. Switching surge is high voltage device, high voltage AC, DC, high voltage AC, or short duration transient voltage, option D hyperbolically dying voltage। इसका जवाब हमारे पास ऑप्शन सी है short duration transient voltage। MCQ number 734. Insulators for high voltage applications are tested for option A power frequency test, option B impulse test, option C both A and B, option D none। इसका जवाब हमारे पास ऑप्शन सी है both A and B पावर फैक्टर फ्रीक्वेंसी टेस्ट इम्पल्स से ये इसके लिए टेस्टेड होते हैं। ऑप्शन MCQ number 735. Transformer contributed to ratio interference due to option A corona discharge in air, internal or partial discharge in installation, option C sparking, और ऑप्शन बी एनी ऑफ अबव। तो इसका जवाब हमारे पास ऑप्शन डी एनी ऑफ अबव इसमें से हो सकता है, सही कहा। MCQs number 736 हमारे पास है surge voltage originate in power system due to option A lightning, option B switching operator, option C over faults, option B any of above। इसका जवाब भी एनी ऑफ अबव है। सर्ज वोल्टेज और ओरिजिनेट हमारे पास पावर सिस्टम किस वजह स्विचिंग ऑपरेशन की वजह से, फॉल्ट की वजह से भी और लाइटनिंग की वजह से भी। MCQ number 737. The torque developed by the split phase motor is proportional to sine of angle between IM and IS। ऑप्शन बी हमारे पास कोसाइन एंगल between IM and IC, ऑप्शन सी हमारे पास मेन वाइंडिंग करंट IM और ऑप्शन डी एक्सिलरी वाइंडिंग करंट IS। इसका जवाब हमारे पास ऑप्शन सी है। ऑप्शन ए the torque developed by the split phase motor is proportional to sine of angle between IM का मतलब है करंट इन मेन वाइंडिंग और IS का मतलब है करंट इन सेकेंडरी वाइंडिंग या एक्सिलरी वाइंडिंग। MCQs number 738. The power factor of an alternator depends on। तो पावर फैक्टर ऑफ अल्टरनेटर जनरेटर का पावर फैक्टर किस पे डिपेंड करता है। ऑप्शन ए लोड, ऑप्शन बी
स्पीड ऑफ मोटर ऑप्शन सी, कॉर्डलेस ऑप्शन डी, आर्मेचर लॉसिस। इसका जवाब हमारे पास ऑप्शन ए है, लोड पे डिपेंड करता है, अल्टरनेटर ऑफ पावर फैक्टर ऑफ अल्टरनेटर। MCQ number 739, a welding generator has dash characteristics, rising option A, option B drooping, option C linear, option D none। इसका जवाब हमारे पास ऑप्शन बी है, ड्रूपिंग। MCQ नंबर 740 है हमारे पास, a 4 pole 12 slot lap wound DC armature has two coil sides slots, assuming single turn coil and progressive winding, the back pitch would be option A 5, option B 7, option C 3, option D none। इसका जवाब बस ऑप्शन बी 7। ये 4 पोल्स का मतलब 4 मैग्नेट्स लगे होते हैं और 12 स्लॉट, उसमें 12 खाने होते हैं, उस 12 खानों में वाइंडिंग हुए होते हैं। सही है, ना इसका जवाब हमारे पास ऑप्शन भी आता है। तो ये हमारे पास 740 MCQs कंप्लीट हुए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में हमें भी याद रखिएगा। वस्सलाम।